उसके पहले both of you mark it. But both the textbooks are not the same, is there? Anavule mark. Either you continue with the morning star or you use the book and get. Okay, we'll do a small justification. You give both the book to me. I'll mark it for her first and mark it for you second. Will you? Anyway, marking and learning only, na? So meantime, what you do? Both are having a volume. Any volume? No. Not even a single volume. Geography, history. Okay, example. At least you write the heading called judicial review. I explained, you remember? Yes. Side by side, I'll make you to write what is, because there is a separate question in board exam. What is judicial review? And now I've already explained that. Let me catch my dear student. Come on. Now, whatever you have understood, I'm not going to ask you what. At least he is there, you. You see that previous cases. Wait. To make strong. Make strong what? Make strong use of those cases in but what? cases. High Court and Supreme Court is a court of record. One. Second, you can revisit those judgments and cases which were given few years before. And when you are fighting a similar case, you can make a review of the same. It's like you've already made the notes, correct? And based on that same notes, you are elaborating the answer. You already have the skeleton. You understand skeleton? For which you have to make the body. In fact, some people I remember in science classes, they said if human body is without skeleton, what will happen? There will be no mass, no body. I mean, actually, if this entire room doesn't have the RCC and the steel, No. anytime one kick to the, what do you call it, that bricks will on your head. So, judicial review is that part of the Supreme Court and High Court. It revisits and reviews its own judgment which was done at an earlier stage. The court won't do it. It is the lawyers, advocates who will make a reference to that and they will review or revisit the same. Samjha? So start writing the judicial review. Meantime, I hope your volume also given to me. Yes. Not test. Because I know this book is a wonderfully not so good book. I would love to see what it is written. If not, I'll give you on my own. So right now. Indian Constitution has provided for a perfect balance between central and the state government. Perfect balance between the central and the state government. Second point. They all are coldy people. You guys are going to pass it to me. Which I should not take it. We already started there. So पहले तो श्रुति के से बिल तो जरूर दो जो लाया ही है बात है मेरी मुझे काम है लेकिन मेरा and nowadays I know I heard that this infection is spreading है ना and अभी कोविड का कुछ दिन बोल रहे कुछ बोला नहीं मैं ऐसा सुना सर बोलो मत सर मैं तो क्या जैसे कि मुझे नहीं होता है ना चलिए let's move on second point. So, next one. Both central and state go beyond
their limits. I can't do it. Now AC is switched off, fan is switched off. Shall we keep the door open so that you'll get fresh air and you won't be feeling suffocated? Your room is itself is it's a nice room. It is quite a little room. I enjoyed this room. I remember the time was there when we used to have 30, 40 students and no place for to sit. And then they will have early morning lectures, 4 lectures, 5 lectures. And in between, You can put on the stand instead of putting. nail it. अभी तो last ये बच्चे जाके जो ब्रेक में स्नैक्स वगैरह खा के आएंगे, एसी है बंद है, फिर तो हम लग गया सर प्लीज सर ओपन द डोर। चलो ठीक है, बोले ब्रेक्स में ऐसा कतर खाएगा तो ये होता है सर, आई डोंट नो सर, ये वो मतलब ठीक है जो भी है वी कैन suffocation. ओके जुडिशियल रिव्यू समझा। सेकंड पॉइंट, I'm so sorry, third point. It is also said to be I'm so sorry, I'm yawning today badly. The question of interpretation is bound to rise. What is bound? मतलब generally होने ही वाला है ना? What is cracking in? What kind of bottles? Due to, or not due to, in the original jurisdiction. Next point. The legislature may not possess. I'll go slow. Hey, I need to mark what for you. I think I have marked already. You don't want. No. So बताइए पहले. All important things I तो have. फिर why you want me to? You want me to mark for you? These things only, man. What he is asking. Or you also say everything. And mark. small points which are important for books. Wait. जिसको देखिए. All mark. 90 है sir. You didn't mark. You want me to mark. पक्का ना? For next 15 minutes, the book was with me. Now you say. Jharkhand. You have the habit of that place. No. Which part of Jharkhand are you? Ranchi? I know that, but I know. How far it is from Ranchi? But you will be getting down at Ranchi or Dhanbad? Dhanbad, no. It's a rich mines. I know Dhanbad. Not no means I've never gone. Born was जब इधर ही है. And your That confidence and at that time मेरा ही. with my grandparents. अच्छा both are there. Okay, write down the next point. What did I say? Legislature may not possess, correct? May not possess बोला ना? The wisdom or experience. Wisdom or experience. Or it does implement the laws impartially, or it does implement the laws impartially. Underline the word implement. Change the paragraph. So there is always a need for reviewing किसमें फिर ये
Without reading also you can give thumbs up. Watching was it? Acha, nobody. Earlier someone was raised. So there is always an rising need for judicial review. Judicial review. Next. Instead of me marking, I would love you guys to write what do you mean by write down the question. Hey, ये और दो chapter में वो बता रहे इसके बाद कौन सा लगेगा? 2 history lectures ना, और geography lecture. Geography 1 history. So that is this one. So this is complete. And then in geography, we have completed that minerals and energy resources, na? That way this fellow is absent. Mineral base, did I complete it? I've completed, na? I was Only one chapter in geography and 2 chapter in history. Total 3. Waste management. management में 2 part हैं. Listen. Minerals and energy resources we have completed. But 2 part हैं waste management. I'm asking this one. This Minerals. Complete all. what is this chapter? Iron steel, did I explain? Oi. She is saying she was there or not there, I don't remember. So did we do that petrochemical item? I remember. You are making to write an electronics industry that. So I need to start a new chapter in in geography today. And history is almost madam is taking beautifully. So no need me to interfere. क्यों? अच्छा तो हिस्ट्री मेरा ही है. So 3 chapters are transport, waste management 1. But I think I remember we have started with transport. If you are not. Intro किया था आपने last में. मैं recorded लेके ठीक है. तो ये जल्दी फिनिश करते हैं फिर ज्योग्राफी में जब मारना है. ये हिस्ट्री में कुछ नया करना चाहिए. इसमें नहीं चाहिए ना. तुम्हारा कितना साल है? 7. तुम्हारा इतना ही 70 साल की हुई है. 70 साल इंडिया ही फ्रीडम होके 75 years हो गया. So last 2 weeks से तो history हिटलर और हर हफ्ते में 3-3 4-4 लेक्चर होते हैं. हाँ हिस्ट्री का हां मतलब हर एक दिन ऑल्टरनेटली लेक्चर है ना. वो हिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगा ना. सपने में और मैं ट्यूसडे को सोच रही 3 लेक्चर है हिस्ट्री के वैसे ऑल्टरनेटली नहीं हो रहा है. मैथ्स अच्छा फिर मेरा कैसे थी? कर भी हिस्ट्री का आई एम नॉट देयर ना. नहीं चेक करो. Normally Wednesday I am in copper. आपका नहीं है देखो. Well, see, if I am not going there, this is very close to my house. That is also आपका नहीं है. नहीं है. Check whose name is given. मैम का VSG. Confirm. Because I know I am not. VSH23 क्यों है? कौन सा? सुप्रीम. अरे ठीक है. हाँ तो उसमें था ना. पोर्शन में सिलेबस में लिखा था. चल. You write quote of record. What is quote of record? What do you mean by quote of record? अच्छा, there is one small video for which I will be playing Habeococcus mandamus Q. You write that red part, what do you call it, Raja? And you check in your book, what is that quote of record? Do you get something? क्या दिया? You show your books. Judgments are recorded for evidence and testimony. All its decisions and judgments are Correct. बस वो लिख लो. Quote of record, that's enough. They have been forced law and binding. Look here, I played in some other classes. It is still pending. So first वो लिख लो. Then I'll play this small and nice video. What is called as a writ, and that will end up the chapter. And then the next 2 period, not 2 period, close to one quarter. We will complete not complete. We can start the transport. Can we do extra lectures for topo sheet?
Why not? But why do you? Acha, you inform your coordinator. Did you need it? Because in May I was absent and geography teacher in school she never. But I didn't. Tokushit I didn't teach na for you guys. Here under Dr. I didn't. Initially, initially I was teaching history. ठीक है, you tell. She will. Management will connect me or some other. Online नहीं थी. हाँ ठीक है ना, बोल दो ना. वो online lectures online नहीं रखते, online ठीक है, बोल दो कि since it is proper you need physically, फिर देखते हैं फिर क्या करेंगे. बस देखो, online में फायदा मुझे भी है, तुमको भी है, but नहीं समझ रहा. कुछ बहुत छोटा छोटा रहता है तो online ठीक है, आप लोग का view point सारा आपको पे, but you should put that सारा आपको पे so that coordinator, and she will give you, and I will come back. We were initially right because there was no scope for offline lectures. That's why we had online, na? Because and maths also we have to do. We have not done maths at all. कि मैथ्स तो सारे कर देता है. Like yeah. यार तुम लोग जो मैं एक्सपीरियंस है एक बोलता नहीं क्या जाने दो राइट वापस करने में सारे प्रॉब्लम पेमेंट करा दिए. वापस जो करने लागत कोई करा. याद है तब मैं ऐसे ही 6 घंटे करा सर. you are not finding ordinary data. ठीक है याद है एक्सेल लेक्चर लीजिए. ठीक है चलेगा देखो गुड आई लाइक इट. ये बेचारे तुम पे हावी होती रहती है. कट भी हो गया ना थोड़ा. क्रिएटिव मॉडलिंग में सारे मैथ दिए हैं. Then I will make you to practice in a different. But I did teach you math courses. No, not even a single. And that is right. Who taught you maths then here? That was Toku sheets. उनने टोकू शीट किया. आप देखना जरूरी है. Maps of India. Maps of India. नहीं हुआ ना. मैंने कॉलेज लेक्चर मैं और आपने बात करें 6 घंटे. But maps of India किया. हाँ सारे कर दिए. 6 मैथ थे 6-7 मैथ थे सब करा था. अच्छा एक मिनट इसको जरा तुमको चाहिए. मुझे भी चाहिए. So but छोड़ो ना, then why is the battle going on? Let's put an end to the conversation and let's quickly jump in. Okay, now let me explain this writs now. Now if I want to tell you the meaning of the word writs, it comes from the word written complaint. You remember and tell me when was the first complaint that you written and on whose name did you write? in 2012. Okay. Against who? Cousin brother. Who? Family के अंदर भी लिखता है. To whom did you write? My cousin brother. Then what? Regarding what it was? Regarding my car. Anything? Okay. You don't write any letters. So here we always believe India being a democratic setup, they have the words are not so easy, but when I explain through the video, you'll come to know. Okay. So these are written complaints filed by an advocate or a lawyer on behalf of the citizen. Correct. Where they are asking some solid information from the courts, judicial. It is the first one when I say this habeas corpus, hand over the body. A person has been convicted, the person has been convicted, he has been caught by the police. He is kept in prison. The question arises in 3. Is he alive? Was he produced in the court? Is he still in the jail? Police says don't know. I think 6 months or 1 year, I'm not very sure, but that day there was a nice movie which showed this habeas corpus only. I think J.B. Surya only acted it dubbed in Hindi and other languages, where the Surya, the lawyer, plays a very important role in getting a man. He dies in the prison, but that wife keeps struggling. It's a very low caste woman. It's a nice little movie. But that movie casting was so drilling, young students don't understand, but it was a one.
South Indian. Tamil movie, but it was dubbed in Hindi also. I watched it in Tamil to understand, but I said people young age should not watch it because of the grilling experience of the police. Okay, so let us write only all the one, then I'll make you to understand. One is habeas corpus. Come on, repeat. Next is mandamus. क्या हूँ चेक कर रही है बोलो. Next is quo warranto. Quo warranto. Then certiorari. Am I correct? इसको पता नहीं. हाँ उधर है ना. And the last one is prohibition. Also, oh my love God, what is this? I don't have a tongue twister. I remember it was a fourth lecture in my school days when this was taught. While eating the dabba, my lunch box, I was learning all this. Habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, prohibition. My friends used to say, "Yeah, ये dabba खाते से मुझे पढ़ेंगे." Something new. Correct. So these are the cases which you can file either to a high court or to a Supreme Court, and everyone deals with. So if you remember, we have 6 fundamental rights. Correct? 6. Out of which the 6 fundamental right, I say right to constitutional remedies. Right against लिखा तो पूरा ही उल्टा होता है. Right to constitutional remedies. मतलब क्या है? Whatever problem that court you face, you have the right. This is that. In fact, that 5 fundamental rights is protected by the 6th fundamental right, which gives you writs. Absolutely clear. Shall we play that video to understand what is the video saying? It's a very Titanic type video, not Titanic type, but you will understand at least in a very good one. Simple. So let me play that video. Okay. देखो आर्टिकल ये सब आपको नहीं सुनना है, बस ओनली वो मीनिंग एक्सप्लेन करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक. और इन्हीं आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 जो हमें राइट देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. यानी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं. और यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर देता है कि वो हमारी रिट पिटीशन को एग्जामिन करके एक रिट इशू कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए. अब क्वेश्चन ये है कि ये रिट होती क्या है. तो बेसिकली रिट जो है वो एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन, कमांड या फिर ऑर्डर की तरह. ये रिट जो है ये 5 तरह की होती हैं और ये 5 रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यो वारंटो. सबसे पहले शुरू करते हैं हेबियस कॉर्पस से. हेबियस कॉर्पस इस रिट का मेन पर्पस है सिटीजंस की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना ताकि उन्हें इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके. एक एग्जांपल इलीगल डिटेंशन unless and until you are not given the arrest warrant. Unless and until you are not told the exact reason, you cannot be arrested. And once you are arrested, you cannot kept in the jail. Within 24 hours, you need to be presented to the court. And जब judge बोलेगा कि 14 days का 5 days का रिमांड में रखो, उतना ही रख सकता है. That is what habeas corpus. Hand over the person. If he is found missing, he will explain in Hindi. समझते हैं जब भी किसी इंसान को डिटेल किया जाता है तो हमें पता है कि आर्टिकल 22 उसे ये राइट देता है कि उसकी अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है. और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है क्योंकि 24 घंटे के बाद इसे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा. और ऐसी स्थिति में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल सकता है. बट ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की इस इलीगल डिटेंशन के दौरान वो ऐसी स्थिति में हो ही ना कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पाए. तो इसीलिए उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जैसे कि उसकी मदर, फादर, उसकी वाइफ, भाई या बहन या उसके फ्रेंड्स भी उसके बिहाफ पर हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं. और इस रिट पिटीशन के रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करके रिस्पांसिबल अथॉरिटीज को ये ऑर्डर देता है कि आप एग्रीव्ड पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आओ और फिर सुप्रीम कोर्ट ये एग्जामिन करता है कि क्या एपिलेंट की डिटेंशन लीगल है.
अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एग्जामिनेशन में पाता है कि डिटेंशन जो है वो इलीगल है, तो वो एग्री पर्सन को छोड़ने के लिए निर्देश देता है। और ये जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी एप्लीकेबल है। यानी अगर आपके पड़ोसी ने आपको अपने घर में बंद कर लिया है, तो भी आप या आपके रिलेटिव्स सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल सकते हैं। ये जो वर्ड है हेबियस कॉर्पस, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। तो ये हुआ हेबियस कॉर्पस। इसको हम wherever is the written word habeas corpus, वो लिख लो to have the body in pencil. Instead of me explaining, you will understand with the examples. उसमें दिया हुआ है you may have the body. Yeah, so what? This is just a one word, it's simple. Why see लिख लो ना? So habeas corpus clear. देखो what you guys are reading and what you guys are listening makes a difference. Okay, when you read you'll understand. Now let us go to the second one, mandamus. पास कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिट जो है मैंडेमस। ये रिट पिटीशन किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या कहें कि सरकारी नौकर के खिलाफ की जा सकती है। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके इस काम ना करने से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल 19 हमें एक फंडामेंटल राइट देता है कि हम अपने लिए कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, हम जो बिजनेस या ट्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं। बट आपको पता है कि कई सारे ट्रेड या बिजनेस के लिए हमें रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज से लाइसेंस लेना होता है। बट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर किसी अननेसेसरी रीजंस की वजह से आपको ऑफिस के चक्कर लगवा रहे हैं और आपको लाइसेंस देने से मना कर रहे हैं या फिर रिश्वत मांग रहे हैं, तो ये आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ, क्योंकि इन अ वे वो आपको ये प्रोफेशन चूज करने से रोक रहे हैं। और ऐसे केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट इशू करके रिक्वायर्ड अथॉरिटीज द्वारा ये इंश्योर करेगी कि जो भी ऑफिसर है वो अपना काम करे। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, और यहाँ पर मैंडेमस रिट द्वारा सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है कि रिक्वायर्ड अथॉरिटी अपना काम करे। और ये मैंडेमस रिट पिटीशन आप कर सकते हैं। भाई साहब तूने नहीं मिल रहा क्या, मतलब दैट ट्रैफिक पुलिस इज मेकिंग यू कम। हाँ, बट अगर तूने टेस्ट में मुझे गड़बड़ किया तो मैं लिख रहा तो फिर कहाँ से तू लिख नहीं गड़बड़ किया ना। सॉरी, आपको तो बार बार कोई शर्म नहीं है। आई रिमेंबर मैं जेल में खुद 3 बार फेल हो चुका है। जो मेरा जो बंदा था, क्या सर आप टोरंटो वगैरह से क्या कर, मतलब अरे उसका और इसका क्या संबंध सर, आप ऊपर से प्रोफेसर भी है, मतलब उसी लिए मैं फेल हुआ। अरे थर्ड क्लास लोग आके तो बैठ के पास हो जाता। फिर अल्टीमेटली फिर थियरी मैंने मेरी जगह पर और किसी को बैठा के प्रैक्टिकल तो मैं पास हो गया ड्राइविंग में। दैट इज नॉट एन इशू बिकॉज़ एवरी क्वेश्चन हैज ओनली 1 मिनट। इट कम्स, यू हैव टू लॉक द आंसर एंड इट फ्रीजेस। मतलब यार दूसरा टाइम तो मैंने ऐसा पढ़ के गया ना, कुछ भी हो जाए मैं पास हो गया। मतलब क्या सर आप understood? If it is not your mistake and the traffic officer, the person is will add or कला, then you can issue a mandamus. Mistake तेरा पर तू फेल हो रहा है और तू उसके ऊपर mandamus क्यों डालेगा? समझा? चलो। कोई पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ। बट आप प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस रिट पिटीशन नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ तो आप ये रिट पिटीशन नहीं कर सकते। नाउ उधर लिख लो, नॉट अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर, दे आर द हाईएस्ट बॉडी ना। अरे उसके ऊपर आप बोलेगा तू तेरा काम नहीं कर रहा ठीक से, मुझे करके सुना दो, देन व्हाट इज द इज्जत? अच्छा नहीं हो जाएगा। श्रुति को जाके बोलेगा आज तुम घर के काम करते हो, श्रुति बोलेगी मेरे ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करता कि नहीं? नहीं करता ना, तो फिर ऐसे ही रहना चाहिए। अभी तो बिल्कुल बोल देना चाहिए चाइल्ड लेबर अंदर जाएगा। Ravi, at least you are understanding. One we have done habeas corpus, this is mandamus. बट ऐसे और कौन-कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ आप ये रिट पिटीशन नहीं कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये रिट पिटीशन आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं कर सकते। मतलब कि आपने मान लो घर में एक पेंटर बुलाया है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप मैंडेमस उसके खिलाफ इशू नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है
और आप उसको एनफोर्स कराना चाहते हैं तो ये भी रिट पिटीशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर कोई ड्यूटी पब्लिक ऑफिसर्स के लिए डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, तो भी आप मैंडेमस रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो भी आप इस रिट पिटीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी आप ये रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। तो ये था मैंडेमस, इसे भी हम मार्क कर देते हैं डन। अब देखते हैं प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हायर कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट्स को इशू कर सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया है, पुलिस ने इसकी चार्जशीट बनाई है और केस चलने लगा है लोअर कोर्ट के सामने। इस बंदे ने कहा कि मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, बीइंग अ जुवेनाइल इसका केस बाकी बच्चों की तरह जुवेनाइल कोर्ट में ही चलना चाहिए, अदरवाइज ये तो इसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो लोअर कोर्ट में इसका केस चल ही रहा था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में प्रोहिबिशन रिट डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिट पिटीशन को एग्जामिन किया और वाकई पाया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है और इसका जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट को हैंडल करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट को इशू करके लोअर कोर्ट में चल रहे इस केस को स्टॉप करा सकते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है टू फॉरबिड, यानी टू ऑर्डर समवन टू नॉट टू डू समथिंग। तो ये जो रिट है ये हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स को इशू करते हैं ताकि वो ऐसे केसेस में डिसीजन ना ले पाए जो उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर है, जैसे कि एक एग्जांपल अभी हमने देखा। और ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ही अगेंस्ट पास की जा सकती है। तो ये तो हो गया प्रोहिबिशन। क्वासी मतलब सेमी। If you want, you write it in one line. Prohibition issued by a higher court to a lower court. To stop exceeding of its power. Higher court to a lower court. Tribunal mat likho, you will get confused. Higher court to a lower court. To stop exceeding its power. कि जितना पावर है उतना ही करो, है ना? चलो, and then you write it can be issued only against वो भी लिखो, judicial and quasi judicial और quasi judicial. You are not feeling hot? Shall we not? Good idea. अरे एसी खासा हो करता है, हम तो करते एक तो करते हैं एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, जाने बैठ जाते, because you guys are feeling better now, both of you. Has the same question to me? You ask question, then only ask. Yes, of course. इसको भी हम बात कर देते हैं डन। अब देखते हैं सर्शरी। सर्शरी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस ये है कि जब आपकी प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट में चल रही है, जजमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उस समय हायर कोर्ट में प्रोहिबिशन के लिए रिट पिटीशन डाल सकते हैं लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रुकवाने के लिए। बट अगर फैसला हो चुका है और आप उस फैसले को स्क्वैश करना चाहते हैं, यानी कि खत्म करना चाहते हैं, वॉइड करना चाहते हैं, तो आपको पिटीशन डालनी होगी रिट ऑफ सर्शरी की। इसको समझने के लिए हम पिछले एग्जांपल को सर्शरी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर कोर्ट ने मर्डर करने के जुर्म में इसे उम्र कैद की सजा सुना दी है और सजा सुनाने के बाद इस बंदे को कोई बताता है कि तुम्हारे साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये तुम्हें सजा सुना ही नहीं सकता था क्योंकि तुम अभी जुवेनाइल हो और तुम्हारे तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। बट केस का फैसला तो हो चुका है, तो प्रोहिबिशन तो हम नहीं लगा सकते। बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट पिटीशन डाली जाए सर्शरी की, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी रिट पिटीशन को एग्जामिन करके लोअर कोर्ट के जजमेंट को स्क्वैश कर सकता है सर्शरी रिट को इशू करके। सर्शरी का मतलब ही होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब हायर कोर्ट ये सर्टिफाई करेगा कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सही है या गलत, और ये इस रिट पिटीशन का यानी सर्शरी का एक प्रकार से क्यूरेटिव फंक्शन हुआ। सर्शरी का एक दूसरा फंक्शन भी है और वो है प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव फंक्शन ऑफ यू राइट सर्शरी मतलब क्या है? If the judgment is passed, correct? If the judgment is not passed, what is the writ we have to issue? Prohibition. जैसे वो 15 साल का लड़का का केस चल रहा है and he has filed a petition. Which petition will he file? Prohibition or certiorari?
He will fight prohibition. Case is going. Already the judgment has been given. Usually. So he will go for certiorari. So what that certiorari will do? It will order the court that you do not have the power to give him the punishment. Then the case has to be taken from that court and go to a juvenile court. Who are juveniles? The court for the children. Who you people are? Yeah. आप लोग कौन है? तो अपना नाम बोलेगा या अपना नाम बोलेगा? Teenage. You are juveniles below 18. Below 18 का. The decision can also be given only by juvenile court and punishment. Punishment ऐसा नहीं रहेगा where you are given computers and other things proper काम करो और computers वगैरह सीखो. It is not a punishment for the adult people. ऐसा नहीं रहेगा. समझा? So that is juvenile court. Let's proceed. तो सर्जरी को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. अब देखते हैं प्रिवेंटिव फंक्शन. यहाँ क्या होता है कि अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर काम कर रहा है या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो हायर कोर्ट ऐसे केसेस को खुद को ट्रांसफर कर सकता है. तो हम देख सकते हैं कि सर्जरी फंक्शन करता है प्रिवेंशन और क्योर दोनों के लिए, जबकि प्रोहिबिशन रिट का फंक्शन है सिर्फ प्रिवेंटिव. और हमने ये भी देखा था कि प्रोहिबिशन रिट सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए ही एप्लीकेबल है, और ये बात सर्जरी के लिए भी एप्लीकेबल थी. पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सर्जरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है. बट हमें पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्जरी दोनों की दोनों जारी नहीं की जा सकती है. तो ये था सर्जरी. अब हम इसे भी मार्क कर सकते हैं एज डन. लास्ट रिट है क्यो वारंटो. क्यो वारंटो रिट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी इंसान धांधलीबाजी करके पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई ना कर पाए. और आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन तब डाल सकते हो जब किसी बंदे के पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करने से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है. क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालोगे तो आपको बताना ही होगा कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. मान लो कि एक सरकारी पोजीशन का अपॉइंटमेंट किया गया है जिसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, एलिजिबल और क्वालिफाइड लोगों से उनकी एप्लीकेशन नहीं दी गई है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पोजीशन किसी के लिए पहले से फिक्स कर दी गई थी, और ये है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 का वायलेशन. क्योंकि आर्टिकल 16 हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की बात कहता है, और अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई तो इसका मतलब है कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ अवर आर्टिकल 16 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है. और अगर आप रिट पिटीशन डालते हो तो सुप्रीम कोर्ट क्यो वारंटो रिट इशू करके कंसर्न अथॉरिटी से ये पूछता है कि आपने किस अथॉरिटी से इस इंसान को इस पद पर नियुक्त किया है, या फिर ये इंसान किस हैसियत से इस पद पर बैठा हुआ है. हालांकि क्यो वारंटो रिट पिटीशन आप सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही डाल सकते हो. मिनिस्टर या फिर प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए क्यो वारंटो एप्लीकेबल नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि करण जौहर अगर कल को एक मूवी बना रहा है तो उस मूवी में बनाने से पहले उस एक्टर के लिए भी वो एडवर्टाइज निकाले और एक कॉम्पिटिशन अरेंज करे, राइट. बट यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पर इस रिट पिटीशन में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही रिट पिटीशन डाले. कोई भी किसी के बिहाफ पर रिट पिटीशन डाल सकता है. तो ये हो गया क्यो वारंटो, यानी पांचों रिट हमने कवर कर लिए. अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो रिट पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो एज पर आर्टिकल 32. बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है और फिर भी आप रिट पिटीशन डालना चाहते हो तब भी आप डाल सकते हो. बट इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन डाल सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स टॉवर. तो क्या आप लोगों को So now you understood. Now read the same thing and let me know if you want me to give the notes, and that's the end of the topic. Am I correct? These 5 bits are only for rich people, not for poor. Two rich and poor पूछ रहे हो. Supreme Court passage. देखो here filing of the writs, there only one is in the High Court, because writ petitions are special. Lower court cannot hear this. If you see that movie, if you want, I'll show you the clipping right now. That lady is very poor, backward caste, and the husband doesn't earn anything. On the top, she is pregnant. She has one more child. And the police even terrorize the child also. So, अगर केस में निकालेगा तो तेरा बच्चा को मार देंगे. It's a very thrilling movie.
Many people said it's a nice movie, but some people said nice to ban karo because I felt it's a quite okay, but one time watch because the way the police treats the backward class, मतलब केस ही नहीं रहता, फिर भी उधर फिक्स करके हर महीना उनको देने का रहता है इतना केस. So she asked, is the rich only for the rich? No, it is for everyone. It depends on you, how do you take the risks. Correct? I'll show that you will understand. Hindi mein रहेगा तो that will be better. In fact, whenever I teach this, I saw that movie the day. I have told all my students to watch it. Some have watched it. Some say, sir, it is not so. मैंने देखा है मुझे याद है. How do you know? How बहुत do you know? पहले किया था. कब देखा? My father was watching it. And you watched it sneak up you? हाँ? नहीं देखना है ना, चुप चुप के. Let's see. देखो. जय बी सूर्या. अच्छा, I think this is. मतलब ऐसा movies मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि it's different from the same old घिसा पिटा love story, which I never watched. War is a very powerful weapon. लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं ये है, बंदा follow और करके यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। इनके पास भी क्या है? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, लेकिन इनके पास एडजस्ट तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे दो केस ठोक दो। हर बंदे पे दो केस. तो हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है, और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। राजा करना मौसम कुट्टी और ये सब ये तीनों हैबिचुअल ऑपरेटर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल कैसे साहब? माय लॉर्ड, पुलिस ने हर कदम पर कौन से झूठ कहा। वो देवर उसने बेचे, उसके हमारे पास डेबिट है। ये लोग फरार हो गए, उसके एविडेंस भी है। You watch it, you can tell you are not watching. So they example how bad is the poor people, they don't know. ये केस में एक स्कैंडल, ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है? पुलिस बता इस सारे के पीछे न जाने कितने झूठ। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। केस को दिन भर ही नोटिस पे क्या? सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी बनेगा, उनका सांस अक्सर कई लोग किया करते हैं सर। बेगुनाह का कौन सी उन्हें अभी से अपील है। बस चारों झोपड़ी को जला दूंगा। हाँ? गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी दादा Should not understand better way, but Hindi adapted to you. कानून तो अंधा है, पर अगर आज के कोर्ट होगा योग है तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन सा पहुंचे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। मेरा हथियार है, that's all. This entire movie moves around that habeas corpus. Okay, this trick, if not, we'll start with geography. Done? Any questions? Any? Confirm. Without money, Supreme Court can't work like a court. You can go, देखो money. Fees to लेते हैं. देखो, that is there. अभी how many poor can go to the Supreme Court? First of all, Supreme Court isn't there in Delhi. One going there, second lawyer, third the fees, and one day hardly for 2-3 minutes hearing, then it goes for after 6 months. Okay, tell me which chapter in geography you want. Hey, in the timetable they have given agriculture 1, 2, 3, 4. But did I finish that? Are you very sure? Okay. If you can make a note, I'm gonna forget. And then now the next chapter you want to start is transport. Sure? Yes. उसके पहले business के बाद देखो तुम सर. That's what I know. Also, last chapter basic management. One they will give introduction. Second they will explain the importance. 720 is the break, na?
and third is the modes of transport. So if you just understand, we'll go very quickly, but it is also quite a lengthy chapter. But we'll do a little bit easy and straight with the first mode is roadways. Second mode is Adi. No, I don't need it. But Highways, national highways. I also cut them. Can't have. Are you sure? Then In all the batches I have explained, they didn't say anything. you can check it as No, I don't want to, but these my goody people should tell me. Okay. Then इसके नीचे क्या का heading है? Types के बाद importance and modes and disadvantage of transport. हाँ वो तो बस उतना ही है ना? Waterways, airways. सारा advantages and disadvantages. Okay. Now look here. When you use about roadways, I write the most flexible. Correct? When I say railways, the one of the longest. India is the second longest. Waterway, I write cheapest. I'll tell you one thing. Airways, I say the word fastest. Okay? So 20, what time? 30. Check. 20 is the break, na? 25 is the break, 6:25. Okay. So if I want to explain the meaning of the word transport, the first picture that will bring into your mind is one, the commuters or we call as passengers, correct? Or commuters. Second, we call the freight. We say Indian Railways. Then we have NHAI. Then Civil Aviation Authority of India. Civil Aviation Authority of India. Or Aviation Authority of India, AAI. And then water comes there. Now India before independence and India today, the biggest change that we feel is the mode of transport. China has done all this 20 or 25 years before. Today they are one of the powerful economies. If I say road transport, I think yesterday's news, I don't know, even although my mother was seriously little bit I watched news, I've completely stopped it. One of the biker, ladies only, due to a pothole in the road, she fell down and the lorry or anything crumpled her. She died. Now what are we talking about all this? So we always believe either it is roadways or railways or waterways and airways, we just focus on the cities. And Bangalore is not ordinary, that is also metropolitan. Correct? But then there is serious scope to do this. So when I explain about transport, it is the actual movement of people from one corner of the country to the another. Roadways are flexible because you can just walk through certain grasses. You walk for a few weeks, that becomes a road. Kacha. It is so easy to construct or divert one road to the another. Can we construct and divert one railway line to the another? So we always believe the flexibility is always there with more with the roadways. For national district highways, are you sure? If I want to give advantages, flexible. It provides door-to-door services. Correct? Easy to construct, easy to maintain. As compared to railways, then asan. And it is the government of India which gives the authority as NHAI. What is NHAI? At least you might have seen the symbol somewhere. It is National Highway Authority of India. You want to say it again? So it makes national highways in India, one state to the another, one capital to the another. See, at least the golden quarter of the. So we believe
The roads are the best mode of transport. And what is disadvantages? Long journeys, tedious, tiresome. You cannot travel long distances. So Yes. traffic, Huh? traffic, I didn't get it. traffic. Traffic, it adds to the increasing traffics. Pollution. And generally, the roads are not in a very good condition, then we will have the life of our dream of our transport. Sorry to say, in certain hometown and villages, I've seen the auto rickshaw carry a pregnant woman, an emergency going. An auto rickshaw runs in such a nice road. Before reaching to the hospital, delivery is done very comfortably. And then take it back to the house also. Like, auto rickshaw में हो गया, access to, no problem. Yeah, all thanks to the roads. कितना अच्छा ऊपर नीचे करता है. Correct? So that is a problem. Now, if I want to talk about railways, I always feel the first railway in India is 1853. From where to where? It is between Mumbai to Thane. Thane, a coalfield area. Mumbai, a textile bound area. You are understanding? So if this is the problem, some people say, are we proud of the railways? So this was started by the British, no doubt. But today, next to Russia, India ranks number 2 in the network, longest. Oh my God. Now India has introduced something called as Vande Bharat. If you have seen the train, it's absolutely amazing. 180 and above kilometer speed. And the doors and the seats are as good as aeroplane. Some people say it's much better than aeroplane. What else? We have a private train running in India called Tejas. Have you heard, or if you travel, then you will really love it. One, because of the facility. Two, because of the 9-inch screen TFT which you have to press and it comes automatically up. The first train was from CST to Madgaon. They said by the time train reached Madgaon, half the screens are gone. India is the only place where the bucket is plastic, but the hook is a big lock and a big chain. Because we are so good, nice little bit. So let us have the break. We'll come back and continue after 5 minutes. Okay? So I think with what Shruti is saying, I can finish this chapter.